Okay, so good afternoon, everyone. Let's welcome to another episode of Decode the Market with Experts. And my name is Neeraj, your host. Before I start, very quickly, I would like to read a disclaimer for this event. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the disclosures carefully before investing. All representations are not indicative of future results. You should consult your independent investment advisors before taking any decisions. And all the securities quoted here are purely examples and are not recommendations. So Paytm Money is a SEBI registered research analyst, and we have today Mr. Pradyut. He's also a SEBI registered research analyst. So we're going to talk about the market. We are going to talk about the stocks. So that's how it's all going to flow. So again, welcome to another episode of Decode the Market with Experts. And today the expert is Mr. Pradyut. So Pradyutji, if you can open your camera, you can open your mic, please. Good to see you, Pradyutji. All set? Yes, good to see you. Welcome to the show. Thank you, sir. Thank you so much, and wish you and all the viewers a very happy Independence Day, 79th. Thank you. Pradyutji, let me introduce Pradyutji. He has got more than 40 years of experience in the market. I think he's in the market since 1993. So he was with international market, and then he shifted to Indian market, and he has been trading and giving advice for quite long time. Okay. Voice is not clear. Voice is clear, Raj. We can hear your voice. We can hear the voices, Raj. So you can check your end, or maybe your volume is low, इसीलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है. So what about others? If you can give me a quick check. Can you hear the voice? So if the other participants, if you can, Ravi, Abhishek, if you all can give me the quick check in the chat box. Sunil, if you can hear my voice. Ranjit, good afternoon, Parikrit. Pakriti. If you can hear my voice, can you give me a quick check? Okay, fantastic. So the voice is very clear. Raj, if you can check your voice at your end, maybe your voice is not, your volume is not up. That could be the reason. Okay, great, wonderful. So voice is absolutely clear. So again, let's get back to our session. So Pradyutji, start with the market. It looks, pretty tricky nowadays. We have seen a good correction in the market, and yesterday we saw a good rally, and today market seems to be pretty neutral. So what are the, first of all, would like to understand what are the factors that's driving the market right now? एक तो क्या factors है जो market को drive कर रहे हैं? Second, आपको technically Nifty, Bank Nifty and all the sectors we'd like to know from you how the market are poised at this point of time. So over to you, Pradyutji. Sir, to start with, markets have been always tricky. I have been associated with markets since 1983 as a buy and hold investor. Later on, from my professional career, it started from 1995. Okay. I was into currencies, then I went on to UK, and then I traded into stocks. So I have found markets always tricky and always uncertain. Always. The only thing certain with markets is uncertainty. Okay. So before I start, I will say something. चलो एक नई शुरुआत करते हैं. एक उम्मीद जो जमाने से थी, एक उम्मीद जो दिग्गजों से थी, वो उम्मीद अब अपने खुद से करते हैं सर. Means the whole idea is that we need to begin again with our analysis and look into the markets to make it certain. Now coming to your question about markets, how they are the catalyst going forward and the surrounding us. सबसे पहले तो we will look into the global markets. Global markets are at all-time highs. The S&P 500, the Nasdaq, and even the Dow is, I think, inching towards its all-time high at 45,000. Correct.
Correct. Year to date, Wall Street is up around, Nasdaq is up around 14%, S&P 500 is up around 10%, Dow is up around 6%. Whereas our markets are up only 2.5-3%. Little bit of underperformance is there. Being being we what do you call running a GDP at 6.5%, as against the economies of the world which is at 3%. We are underperforming at the moment, and the underperformance is quite obvious. Only one threat is there at the moment, and that is Trump's tariff threat. And the way they have hiked it to 50%, it's quite it's a very at a very higher levels, and market is taking with is taking it very is has taken it with caution, the backdrop of Trump's tariff. And here I would like to add one thing is that other than this, I don't see any major negative catalyst in the near term. If you say the mutual fund industries have done very well, from SIP route, we are getting 28,000 crores the last, it was the highest. Oil prices are at lower levels. It's around 61 2 months low. That acts in our favor. Then on FIs are little bit apprehensive since last month. Then previous 4 months they were okay. They had net worth around 40,000 crores. Long story short, my sense is that if we get something favorable on the tariff front, I think happy days are here again for markets. Okay, Yeah. great. The only uncertain at this point of time is where the tariff rates will go and settle. Great. So you meant to say that one of the big overhang right now is the tariff issues. Rest all looks fine, and probably we might see a kind of a rate cut also. What do you think about a rate cut in September? Sir, festival season is upon us. It's starting from 27th of August. So I think RBI will look into the GDP figures which are coming on 31st of August. So after that, probably there is a bright chance because our inflation rate has come down to 1.5%. So to trigger, and GDP is not performing well, and it's stagnant around 6.5 levels. So to perk up the GDP and to perk up the momentum in the growth, probably there could be an interest rate cut. There could be 25 basis rate cut is quite there, sir. We are quite hopeful on that. So Pradyut, let's shift to now technicals. If you can share your screen and let us know about how Nifty, Bank Nifty and other sectoral indices look like. Sir, on my screen is the charts. If you can share your screen. Achha, share. 1 minute. It's done? Yes, it's coming up. Correct. Looks good now. Great. Please go ahead. As far as Nifty is concerned, we'll talk about Nifty at the moment. This is the chart of Nifty. Nifty has a very good support at this week's low, which is 24,336. Nifty is currently trading as 24,640 levels. So 24,336 a good support for Nifty, this week's low. If we break below those levels, 24,336, then we can all come all the way down to its 200 DMA. 200 DMA of Nifty is around 24,050 levels. This is the 200 DMA, sir. I hope you are getting it. Yes, I can see. So, and on the upside, this week's high at 24,701 would be a crucial hurdles. अगर हम लोग 24,701 के ऊपर अगर ट्रेड होते तो probably there is a bright chance that there is some confirmation on the Nifty on the long side, and probably we may move towards psychological 25,000 and ultimately till 25,600. Having said that, the bias at the moment is quite positive. Our bias is positive on the markets primarily on one reason, that we are at oversold levels. We are trading from all-time highs. We are trading at around 6 to 7% down. We are trading at,
And when compared to other global markets, they are at all-time highs. Japanese Nikkei is at all-time high. Even Shanghai is up around 29%. European markets like DAX and all that, they are up 21%. So even Brazil is up 13% year to date amongst emerging markets. So we are on that pretext, we are little bit at oversold zone. So there is a bright chance that we could bounce back to at least till psychological levels if we are able to catch up the global markets. And one more thing is that if you can see here on the daily charts, there are signs of positive divergences. See, instruments are coming down while the oscillators, the momentum oscillators are inching up, are making higher high. This was lower, this was high, and this is high. And this is lower high, low patterns are on the Nifty chart. But positive divergences are there. Only thing is that the confirmation will come about 24,701. This is, I think, day before yesterday's high. Okay. So another very interesting fact is the FIs are selling continuously for last, the whole period we've seen. So how do you think, and today being the expiry day of Nifty, and it's a weekly expiry, but again, short positions are there pretty much from the FI side, institutional side. So how do you think the market unfolding for the second half? Anybody who is probably trading in options or futures. So what do you think from the intraday perspective? Of course, we'll go to the longer perspective, and also let's get a quick understanding about intraday perspective as well. कि आज के दिन में कैसे दिख रहा है? Sir, if I believe FIs have been selling, but equally domestic institutions are buying at double of the amount of those FIs have sold. So somewhere the selling is being met. Selling is being met. We need a little bit of trigger here. When the markets are depressed, even a little bit of positive trigger could make the way for the markets to move up. And that said, we are quite clear about our levels. So at the moment, if someone is an aggressive trader, is an aggressive short-term trader, then he should look at 24,336 as the major support. And little bit, if suppose someone has room to hold the position, then my sense is that Nifty's 200 DMA will act as a very good support, which comes at 24,050 levels. Okay. So this could be the final frontier in the lower side support. With levels in mind, we can look into the long play. That's what my sense is. Okay. Great. So okay, this is about Nifty. And again, from the longer term perspective, from the year end, we have got 6 more months to go. Correct. So how do you think by December 31st, the market will look like? It's of course a wild guess. If the Trump's tariff stays as they are at 50%, then my sense is that the medium term and long term outlook of Nifty will be little bit blurred. Any rally would be a dead cat bounce then in that case. So we have to watch the global scenario very minutely. The US delegation is coming to India on August 25th, and the talks will negotiation and everything will restart. If suppose something materializes by then probably we can move up. And if it doesn't, then my sense is that on any rally we need to be existing on our medium term and long term portfolio. Okay, so you meant to say that tariff is going to play a big role going ahead, how the market shapes up, right? Yeah, sir, to sum up, I would say that in the short term we are quite positive on the markets, and in the medium and long term definitely uncertainty prevails. And when uncertainty prevails, that makes sense, and that's only with one regards, that is US Trump tariff. So makes sense to be unwind your long positions on any strength until the tariff front is not clear. Okay. And how do you look at Bank Nifty? If you can open the Bank Nifty chart.
So I hope I'm clear on the Nifty. Nifty Yes. short term it's positive, and the medium to long term probably 25,000, 25,300. Those levels one need to be exiting the long positions. In fact, let's ask our participants as well कि अगर आपका mind में कुछ भी questions है, please feel free, go ahead, ask your question. I'm going to put the question to Pradyut ji. There's a question from Ranjan. So when I invest, I feel market go against my move. How to predict its move in options? अच्छा, ये एक राजन जी से क्वेश्चन है और प्रदीप जी वुड लाइक टू टेक द क्वेश्चंस एट द एंड. पहले हम लोग का जो पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेक द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. मोर सेंस डेफिनेटली सर. देखो अगर आप दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी. हाँ, ओके, प्योर कैंडलस्टिक चार्ट ऑफ निफ्टी. एक लॉन्ग टर्म में एक मंथली चार्ट्स में कहीं ना कहीं डबल टॉप आया है. ओके, निफ्टी में आया है, मिड कैप इंडिसेस में आया है. तो समथिंग इज सेइंग कि ना लॉन्ग टर्म में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मीडियम टू लॉन्ग टर्म markets are not able to pierce above the previous highs. The Nifty's previous high, this was way back in September 2024, 26,277. And this time, the last, I think in July, we made a high of 25,700. This high. So we need to be moving about these highs immediately, sir. That's because we have to catch up with the global markets. If we are not able to do this and we are falling below Nifty's 200 DMA, then it will be little bit scary for traders as well as for investors as well. Yeah. And with regards to Bank Nifty, I'll take up the charts of Bank Nifty. This is the daily chart of Bank Nifty. Okay. कवि जी ने एक क्वेश्चन है. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी क्वेश्चंस, रंजन एंड पवन. 5 minutes to complete the charts and all that, then we can Sure. take all the charts. ठीक है. All the queries. अच्छा, अगर आप हिंदी में भी बोलोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ऑडियंस विल अंडरस्टैंड. हाँ, तो बैंक निफ्टी हैज सपोर्ट एट द इमीडिएट सपोर्ट फॉर द बेसिक विद इंटरवीक पर्सपेक्टिव. बैंक निफ्टी हैज ए सपोर्ट एट अराउंड 54,700. I'm just taking little bit below this week's low as a support. अगर वो लेवल टूटता है 54,700 levels, then my sense is that Bank Nifty can come down all the way down to its 200 DMA. 200 DMA of Bank Nifty is around 52,750. These are the levels. So around 5% का फॉल वहां पे है. अगर this week का लो 54,700 breaks, Bank Nifty breaks. As long as 54,700 is holding as a support on Bank Nifty, these levels, so एक bounce expected है which can take it up to 56,700. That coincides with my Nifty का view जो short term में bullish है little bit. Basically because of short covering, we can see a short covering rally, or you can say little bit of value buying एक आना चाहिए. This is my sense of Bank Nifty. Bank Nifty can move up towards 56,600, 56,700 levels. Around 1,200 points levels are there on the upside on the very short term. And as I've said, the catalyst would be the festive season is upon us. Interest rates lower हो सकते हैं इंडिया में भी definitely. और एक अगर ट्रम्प के टैरिफ के उधर अगर कुछ समझौता होता है, एक नेगोशिएशन होके आता है, then makes sense to be on the long side. Expert आ सकता है because of all this hope. फिर on the very short term, two catalysts are upon us tomorrow. One is पुतिन का और ट्रम्प का मीट है अलास्का में. That would play a very important catalyst for the next week, how it pans out. And secondly, PM मोदी के एड्रेस, रेड फोर्ट से क्या एड्रेस मींस इकोनॉमी के ऊपर क्या आता है, हाउ वी कम अप टू, हाउ वी गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. अगर कुछ उधर स्टेटमेंट्स आता है, हाउ वी आर कोपिंग अप विद द टैरिफ फ्रंट, देन इट विल मेक थिंग्स लिटिल बिट क्लियर. करेक्ट. ऑन द पॉजिटिव साइड. सो दैट्स व्हाई लिटिल बिट सब चीजों को देख के हुए ऐसा लगता है कि बायस इज ऑन द पॉजिटिव साइड. सो आपका कहने का मतलब ये है, ये जो लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे मार्केट खुलेगा, सो मार्केट विल बी हैविंग मच मोर क्लैरिटी
Correct. on Monday. Then what is today, right? Very nicely said, sir. Very nicely put up. अगर Monday को अगर if you are expecting, as I am at this point of time expecting markets to move up, तो आपको I think futures में ट्रेड नहीं लेते हुए ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में. Okay. करेक्ट. ऑप्शंस का एट द मनी का एक ऑप्शन ले सकते हैं निफ्टी में. निफ्टी का ट्रेड है 24,700 के आसपास इट्स ट्रेडिंग है, तो प्रॉब्ली 24,700 का एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं विथ लिटिल बिट डीप स्टॉप लॉस अराउंड. अभी ये आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 200 लेवल्स, सो एनीथिंग 79 के आसपास उसका स्टॉप लॉस आता है. आई विल पुल अप द चार्ट ऑफ ऑप्शंस एज वेल. Nifty. Yeah, please. Yeah, this is the chart of Nifty, sir. Sorry, call option of Nifty. On the daily chart of call option of Nifty with strike price of 24,700. Correct. See, it's consolidating at these levels. After this spike down, एक panic bottom करते हुए थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है. And probably if it is getting a little bit of positive trigger, then probably it can move up to 400 those levels. So double हो सकता है, but having said that, it should be with clear stop loss. इसका जो low है इसका 119 है, तो you can keep it around 81-83 levels the stop loss. Okay. For this call option trade. For this we are playing purely for next week, and the expiry should be तो जो आने वाला है 27th August I believe, sir. करेक्ट. अगेन मैं यहाँ पे एक बहुत कैटेगरिकली एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि these are not recommendations, these are just analysis. On the basis of technical analysis, Pradyut ji have given his opinion or analysis on that stock. So अगर आपको ट्रेड करना है तो आप प्योरली आप कंसल्ट कर लीजिए एडवाइजर से. Exactly. Now, having said that, Pradyut ji, what are the different sectors that will look like? We have got IT, we have got pharma. Again, वहाँ पे overhang है tariff का. Trump is talking about 250% tariff on pharma. It might come, it may not come, we don't know. IT on the same thing. Now we have got defense, FMCG, and other sectors like how all the different sectors look at this point of time. Sir, abhi things are not clear in most of the charts. Okay. The charts, honestly speaking, they are looking little bit ugly. This is the massive drubbing which we have witnessed in last one and a half months, sir. Correct. So sector wise में अगर आप पूछो मेरे को तो एक अंडर परफॉर्मर सेक्टर दो तो दिखते हैं, वो है फार्मा एंड आईटी. आप खोल के चार्ट खोल के बताइए ना, चार्ट वहां पे एनालाइज करके. दिस इज निफ्टी आईटी. ठीक है. या दिस इज द लॉन्ग टर्म support of this one. Okay, it's underperforming if you can see. Correct. If I will open the Nifty's chart, Nifty is little bit higher on the, it's outperforming, clearly outperforming this. Correct. And IT has not moved towards its all-time high. In fact, it's coming and trying to break down below this 32,200. By the way, it's trading at 35,000 levels. Nifty IT index. So clear underperformer, Nifty IT index. Correct. On any rise, my sense is that this index. मैं एक example देता हूँ sir. आपको IT index के the IT services which we are into. We are India में primarily IT services industries है. But अगर आप देखोगे US में IT stocks Nasdaq is at all-time high. Correct. Nasdaq is up, as I have said, 13%, whereas our stocks IT index has not done anything last 1 year. This is IT index in last 1 year. Year to date, they are down 19%, whereas Nasdaq is at all-time high. What does this suggest? This suggests that we are likely to go and underperform going forward as well. That's because US में भी जो IT stocks बढ़े, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं माइक्रोसॉफ्ट का सर.
माइक्रोसॉफ्ट मेरे को याद है कि ना माइक्रोसॉफ्ट लास्ट 2 साल में इसका मार्केट कैप अराउंड अराउंड आई थिंक $2.7 ट्रिलियन था। अभी लास्ट 1.5 साल में माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप हैज रीच अबाउट $4 ट्रिलियन। करेक्ट। समवेयर 35% अबव आया माइक्रोसॉफ्ट में, बीइंग ए लार्ज कैप। ठीक है, वेरएस अगर आप टीसीएस देखो, टीसीएस का मार्केट कैप आई बिलीव इट्स अराउंड $125 बिलियन एंड दैट हैज रिमेन कांस्टेंट फॉर लास्ट 2 इयर्स। करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो $2.7 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन जा रहा है और इट इज क्रिएटिंग 10 टीसीएस इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर। So that much of outperformance is there with Microsoft. आप Nvidia को ले लो, आप मतलब new age tech stocks are doing phenomenally well over there in US and India also। मैं आपको 1-2 stocks के नाम बताऊंगा मैं आपको। तो these IT services is I think not to be into it if you are a long term investor. I am talking about long term investor। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपका है, एक डेड कैट बाउंस आए तो वहां पे आपको पोर्टफोलियो रिशफल करना चाहिए। दैट्स व्हाट माय सेंस इज, एंड गेट इनटू सम न्यू एज इंडस्ट्री, डिजिटलाइजेशन जिधर है वहां पे आपको मूव होना है, rather than into the TCS, Infosys. These stocks will be a market performer at the best. अगर market performer बोला तो that would be also a bullish statement I think for IT index। अच्छा, वही अभिषेक रॉय जी के क्वेश्चन था कि शुड ही परचेज टीसीएस नाउ। TCS का चार्ट वी हैव टू ओपन। Sir, this is the chart of TCS. This is the monthly chart of TCS. Monthly chart of TCS. If you say, as I was giving an incident about see, straight नीचे आया, massive dropping है सर इसमें। Correct, and it is breaking down below a major support level। Correct, ये आप कोई भी IT stocks में देख सकते हो सर। तो कहने का मतलब है कि IT services is an industry which can perform the market at the best। बट अगर आप न्यू एज इंडस्ट्री में जाते हो, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, आई कैन नो सर। यस यस एब्सोल्युटली सर। ये एक नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है सर। इसके बारे में फंडामेंटली इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव एंड दे आर इनटू एआई। ठीक है, इसका चार्ट देखो, इट इज मूविंग अप from a base of 1350, it has moved up to 2300 around those levels। now it is trading at 2100। इसमें ट्रेंड ऊपर है सर टेक्निकली। करेक्ट। ठीक है, having said that, this is disclaimer sir कि means we don't have any interest on any of the stocks which we are recommending, myself at least and my firm। correct, but the trend on network technology is up। it suggests that you have to be in a you have to move smartly into AI space somewhere। करेक्ट। एंड द रेगुलर जो अब टिपिकल जो इंडिया में IT सर्विसेज है, आई थिंक उसको अगर रैली मिलता है तो यू हैव टू बी एग्जिटिंग एंड कमिंग इनटू न्यू एज इंडस्ट्रीज। न्यू एज इंडस्ट्रीज जैसे इटर्नल हो गया, ये सब स्टॉक्स आर डूइंग फेनोमेनली वेल सर। तो जस्ट ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग टर्म में को इसका रिजल्ट्स भी ब्यूटीफुल आया था। आई थिंक प्रॉफिट वाज 100% अप इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स, द रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स गॉन बाय। सेल्स एकदम ब्यूटीफुल एंड आई थिंक दिस स्टॉक विल मेक सेंस ऑन द लॉन्ग टर्म। Very good. अच्छा, one more thing. There's a question from Mr. Rohit. Any thoughts on Credo? Sir, I couldn't hear you. Could you come up again, please? There is a stock called Credo, CREDO. CREDO. 1 minute. Or Mufti. No. Credit, no. CRE. हाँ। नहीं आ रहा है सर, क्रिएटिव आ रहा है। Is it listed in NSE? I'm not sure. In fact, I'm also hearing for the first time. Rohit, if you can clarify that query a little bit.
It will take 2 seconds, sir. I'll just find out. Creative Excel, Creative I, no. No. Press India, no. Credo, Credo Brands Marketing. Ah, So market cap come at $752 billion. Mufti, okay, Mufti. if you can show it in a chart, your view. No, underperformer, sir. Underperformer. Clear underperformer. See, the stock is on the downtrend and it has broken the previous lows. Previous lows it has broken. So I'm not sure about the fundamentals of the stock, but at the moment it looks like an underperformer, clear underperformer. So it is a clear avoid, right? On any rally, probably till it's 200 DMA, 21-day moving average, it comes at on 150 levels, it would be time to exit. That's what my sense is. But I would rate it as an underperformer going forward as well. Okay. Uh, Pradyut, one of the very interesting space is, financial sectors, not the bank, the other AMCs and insurance companies and all brokers. So how do they look like? If you can give us some idea about the indices, financial services index, and then the individual stocks inside the index, which are the stocks looks most attractive now? if you ask me, अगर डोमेस्टिक प्ले जैसे आप पूछ रहे थे कि डोमेस्टिक प्ले में क्या करना चाहिए, कुछ अगर अच्छा लगता है तो वहां पे my sense is that M&M is looking good, TVS Motor is looking good. I will pull up the charts one by one and yes. track on those stocks. These are the charts of M&M, sir. M&M we have massive breakout on the upside is there, lots of good nice outperformance is there for this stock. एक अगर आप बोलो तो एक ascending triangle type upside में breakout है इसमें, ठीक है. कंपनीज डूइंग फिनोमिनली वेल, मॉनसून में एक पॉजिटिव है, तो पैसेंजर सेल्स व्हीकल इसका अच्छा है. लास्ट मंथली फिगर्स जो जुलाई के मंथली फिगर्स है, इट वाज वेरी गुड फॉर दिस स्टॉक. तो अगर आपको डोमेस्टिक प्ले में कुछ अगर करना है तो आई थिंक M&M वुड बी अ गुड स्टॉक. लार्ज कैप भी है तो रहेगा, बट डेफिनेटली ऑन एनी, कभी भी मार्केट्स में कभी कोई रीजन के कारण एक पैनिक सेल ऑफ आता है, तो these stocks are I would advise these stocks are the should be on your radar. M&M. Then I will pick up one more stock, TVS Motors. Okay. It's TVS Motors chart. It's outperforming higher high and higher highs pattern is definitely there on all the time frames, sir. On the monthly charts, it has given a new upsurge basically. See, it's moving and it is holding very well on its 200 DMA, 50 DMA and moving upside. Okay. So TVS Motors could outperform, is likely to outperform. M&M is likely to outperform. Then अभी ना रिजल्ट्स में लार्सन का रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आया था सर. लार्सन का आई वुड से कि ना लार्ज कैप में थोड़ा सा रहने से ना बेटर है, until and unless that the tariff issue is sorted out. That's what my view is. Because big large caps would be able to address the tariff issues little bit very nicely. That's what very prudently they would be able to handle those things. Okay. Okay, so Larsen, I was talking about Larsen. Larsen ka देखो, it is not giving up. Despite giving up, this is making a upside breakout के लिए it is getting ready. Probably 3662 है the current market price, and my sense is that probably should move towards 4100, 4250 levels. The results were very good. Let's focus on those stocks. See, देखो ये monthly में एक flat pattern है इसमें से. If you can see ना, these are the monthly charts of Larsen. Larsen में एक monthly में flat pattern है. Correct. So on any panic, definitely these stocks should be looked into. देखो सर, एक such a beautiful textbook type of flag pattern is there on Larsen's chart. Absolutely. So makes sense at this moment to be with large caps, जहां पे थोड़ा सा visibility दिखता है. क्योंकि अगर कल emerging markets में fund FIs इन्वेस्ट करते हैं
तो probably they will go into this type of stocks. Account Mm-hmm. steps basically. Okay. And अगर we will take a pharma sir, I think. हाँ, I think in the meantime दो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं. देखिए एक है क्वेश्चन रवि कवि जी का, BEL एंड जियो फाइनेंशियल. हाँ, जियो फाइनेंशियल एक आउट परफॉर्म किया है. दिस इज द चार्ट ऑफ जियो फाइनेंशियल, बट इसमें लास्ट अगर मैं वॉल्यूम्स भी इसमें डालूं तो इसमें लास्ट नाइस एक्यूमुलेशन हुआ है जियो फाइनेंशियल में. I sense around this level would be the support for this stock. एक uptrend में है सर, but not on the very short term. Not on the short term. I would advise not to be. नहीं सर, it looks little bit on the very short term थोड़ा सा capped है. तो on definitely if you can get a level of 260 270 levels, that would be a good level to enter this stock. अभी रेजिस्टेंस जोन में आए हैं वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक बढ़ा है तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन विद मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. ओके. या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट BEL? BL, एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश ऑफ विद दिस. See, it's holding on to the trend line perfectly well, but it has appreciated a little bit fast. The move up move was a little bit थोड़ा सा फास्ट आया. तो अराउंड दिस लेवल्स, ये जो लेवल है अराउंड दिस लेवल जियो फाइनेंशियल का सपोर्ट्स आता है. सो डेफिनेटली ऑन डिप्स अगर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप 300 पे भी लो, बट लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड डेफिनेटली. दैट्स बिकॉज अगर मार्केट्स में कभी कुछ पैनिक आता है तो यू कैन लैच ऑन टू दिस स्टॉक जियो फाइनेंशियल. It's trading well above its 200 DMA, 50 DMA, 100 DMA. So positive signs are there definitely on this, but definitely on the this one on any panic bottom. Yeah, you were saying something about BL, right? Correct. BL is a stock with investment perspective, yes sir. Investment perspective, yes. थोड़ा सा इसमें results were also very good. My sense is that around 330 जो इसका 200 DMA 330 340 के आसपास, I think if you can latch it on to, if you get those levels then should latch on to those BL around those levels. अभी भी थोड़ा सा overbought levels में है. एंड डिफेंस थोड़ा सा ना अभी भी देखो इसमें ना मंथली में देखो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है. दिस इज द चार्ट ऑफ एंड टुवर्ड्स द टॉप में आए तो आपको एक करेक्शन मिल सकता है इसके 200 DMA के आसपास, विच इज अराउंड 330 340 के लेवल्स. एंड डिफेंस एज ए स्पेस में अगर डिफेंस का इंडेक्स निकालूं सर, ये डिफेंस का इंडेक्स है, इट इज जस्ट लैंग्विशिंग एट द मोमेंट. इसमें थोड़ा सा एक ये आया है, क्या बोलते हैं, एक सेल ऑफ आया हुआ है डिफेंस स्टॉक्स में. डिफेंस स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आया, सेल ऑफ नहीं मैं बोलूंगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आया है एंड इट इज सहमा से है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है सर. Okay, so it's took a kind of a support and consolidating probably, right? Different stocks. करेक्ट डिफेंस स्टॉक्स है. अगर आपको देखना है तो रेलवे देखो सर, अगर डिफेंस और रेलवे देखना अच्छा, चाहते हैं. Pradyut ji, there are a few more questions. प्लीज. Tata Power. There's a question on Tata Power. Tata Power after results it didn't perform and sense is that little bit of corrective declines are there. Tata Power, NTPC, these stocks are not moving. They are lost their momentum. If you see, this is the chart of Tata Power sir. अगर आप देखो रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स वेर गुड बट द स्टॉक NTPC these stocks are losing momentum. अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक्स है तो कैन ही होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बट ऑन डिक्लाइन सर. नहीं, इफ किसी का पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो ही कैन होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म. I would say इसका मोमेंटम आएगा above this level sir. I would mean जो मेरे को क्लैरिटी दिखता है चार्ट्स में, the momentum will come above 415 levels. Okay. Above, I think I'm very clear on the technical levels. 415 के ऊपर definitely yes you should get into this type of, you can get into Tata Power.
बट दिस स्पेस टाटा पावर हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, या आपका अडानी पोर्ट हो गया, तो ये सब स्टॉक्स आर लैंग्वेजिंग, जहां तक मेरे को लगता है। अडानी पोर्ट नहीं, सॉरी, अडानी एंटरप्राइजेस समथिंग, या So अगर कोई फ्रेश बाइंग के लिए जा रहा है, probably this is not a right time. Wait for some kind of more correction. these stocks have lost their momentum on the buy side. Okay. And markets are latching only to one theme, sir. That is new age industry stock. अगर आप न्यू एज इंडस्ट्री स्टॉक देखते हो, जैसे इटर्नल देखते हो, मूविंग अप विदाउट एफर्टलेसली, दे आर मूविंग अप, इटर्नल। ठीक है, एक और स्टॉक है एफएल, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुली लॉन्ग टर्म मूवमेंट आ रहा है। देखो एक कितना बड़ा कंसोलिडेशन इसका, मंथली में इट इज मूविंग अप ऑन द अपसाइड। So I have to be on those stocks which are in momentum, and the theme of the market is supporting them, sir. And they are likely to. That's what my sense is. Okay. ठीक है. Because the patterns have emerged in the bullish patterns have emerged in monthly or long term charts like quarterly and yearly charts as well. अगर आप देखो ये it is making higher high on the yearly charts. बट अगर अब मैंने सेम चीज अगर मैं टाटा पावर में करता हूं, तो देखो एक स्पाइक देख के अभी वहां पे रुक गया है सर, रुक गया है सर, पूरा लूजिंग इट्स मोमेंटम। अच्छा प्रद्युत जी, एक पवन आनंद जी के क्वेश्चन है, लुकिंग एट द वोलेटिलिटी ड्यू टू द पाक वॉर थ्रेट एंड टैरिफ बाय यूएस। ऑफ कोर्स लास्ट कुछ दिनों से इंडिया पाकिस्तान थोड़ा और रिन्यूड हुए हैं, जो देयर कुड बी अ वॉर प्रोबेबली, आसिम मुनीर का भी यूएस में कमेंट्री आए हैं। देन इन रिस्पांस टू दैट, शुड वी टेक आउट मनी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड? पवन जी उन्होंने पूछा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट जो है वहां से पैसा निकाले क्या? तो आई वुड लाइक टू आंसर दोस क्वेश्चन, पवन जी। सो अगेन प्रद्युत जी आप बता दीजिएगा कि बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? करेक्ट। So वहां पे yes, in short term there could be some kind of volatility and noise because of the tariff war, because of the tension between India and Pakistan. But long term investment जो है आपका म्यूचुअल फंड में SIP क्या हुआ है, I think that you should continue that SIP. You should not take the money out from there. But if you are a very short-term trader looking for momentum, probably you can wait for a better time. But म्यूचुअल फंड से जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, वहां से तो आपको मेरे ख्याल से नहीं लाना चाहिए। प्रद्युत जी, यू कैन गिव योर ओपिनियन एज वेल। Sir, mutual fund always it's a better and safe way of investing your funds, sir. Always, and it's long horizon थोड़ा सा long term है आपका, and definitely that makes more sense. It's safety तो है वहां पे, but individual stocks में अगर जाते हो तो कितना सारा चीजें हैं जो यहाँ से खराब हो सकता है और पैनिक एक आ सकता है। बट म्यूचुअल फंड आई थिंक मेक सेंस, ऑलवेज इट विल मेक मोर सेंस। अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड का एसआईपी रूट में कितना आ रहा है, 28,000 करोड़ का आ रहा है सर। सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, so you need to be participating there. Okay. अच्छा प्रद्युत जी, going back to the next question again, your view on Ashok Leyland and GAIL. Ashok Leyland and GAIL. अशोक लेलैंड सर लॉन्ग टर्म स्टॉक तो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके। जैसे मैंने बोला M&M, अशोक लेलैंड, मारुति, इवन हुंडई मोटर्स, these stocks are doing, auto stocks में TVS Motor, these 4-5 stocks are really doing well. So some of the auto stocks seems to be very bullish. Yeah, somewhere it is looking good, quite promising, sir. Okay. और नियर टर्म में तो फेस्टिवल सीजन भी है, तो my sense is that this sector should outperform at least these 4-5 stocks which we are discussing. And what about GAIL? Yeah, तो Ashok Leyland is buy with means buy and hold as a medium. Buy and hold. Correct. ये तो कहीं से भी आपको अगर आप 2-3 साल रख दोगे तो आई थिंक मेरा सेंस है 200-220 तक जाते हुए दिख रहा है सर ये। ओके, फटाफट आई हैव गॉट मेनी स्टॉक्स एक्चुअली। एक है टाटा मोटर्स, सेम ऑटोमोबाइल सेगमेंट, टाटा मोटर्स। रिजल्ट्स मींस इट्स इन डाउन ट्रेंड में टाटा मोटर्स, ठीक है, एंड रिसेंटली दे हैड एक्वायर्ड सम फर्म। जेएलआर का सेल्स भी वीक है, टैरिफ कंसर्न्स है,
ठीक है। और सेंस इज टू, अगर आपके पास टाटा मोटर्स है, रिस्की बेट हो सकता है ऑन द बाय साइड। कुछ अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ कंपनी में, तो प्रॉब्ली यू कैन सी ए स्पॉट इन टाटा मोटर्स स्टॉक प्राइस, बट अदरवाइज द स्टॉक इज क्लियरली इन ए डाउन ट्रेंड सर। माई सेंस इज दैट अगर आपने अशोक लेलैंड बोला या हुंडई मोटर्स बोला या मारुति बोला या एमएनएम बोला, आई थिंक एमएनएम वुड बी ए बेटर बेट सर। नहीं नहीं, ये तो न्यू बाइंग के लिए हो गया। अगर किसी का पास ऑलरेडी ये स्टॉक पड़ा हुआ है तो ही शुड होल्ड इट। और माई सेंस इज दैट इट मेक सेंस, अगर आपको एक अच्छा टाटा मोटर में एक जंप मिलता है, अभी 663 है, अराउंड दिस लेवल्स आपको एक जंप मिलता है 800 के लेवल्स में, देन आई थिंक शुड शिफ्ट टू एमएनएम और टीवीएस मोटर। दीज टू स्टॉक्स आर लाइकली टू डू वेल, टीवीएस मोटर एंड एमएनएम। ओके तो टाटा मोटर, आई एम नॉट क्वाइट पॉजिटिव ऑन टाटा मोटर टेक्निकली, ओके लोअर ओके। लेवल्स में है। कभी कभी सेइंग दैट उसका बाइंग है 900 रुपये में, तो उसका बाइंग प्राइस से काफी नीचे है अभी। एक्चुअली कभी जी आपका प्राइस से काफी नीचे है। सर, तो टाटा मोटर्स का जेएलआर का उसके ऊपर जो मेजर डिपेंडेंट था, वहां पे सेल्स कम आया है सर, परफॉर्मेंस खराब आया है। और हम्म, प्लस चाइना में है, यूएस में ये सब मींस टैरिफ कंसर्न्स है। तो ये सब इश्यूज जब आपको दिखता है, और कंपनी, एक स्टॉक स्पेसिफिक कंपनी में कुछ अनाउंसमेंट हुआ तो यू कैन सी ए स्पाइक, जब भी ये स्पाइक मिलेगा, तो माय सेंस इज दैट टीवीएस मोटर एनी टाइम, एमएनएम एनी टाइम ऑन एनी डिक्लाइन सर, फॉर लॉन्ग, इफ हम्म, यू आर ए लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर। जैसे अगर इन्होंने अगर 1000 में बाय किया रहेगा, तो प्रॉब्ली हो गया रहेगा, आई थिंक एक 8-9 महीना हाँ, हो गया रहेगा। तो मेक सेंस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म अगर टीवीएस मोटर और एमएनएम दिखता है तो। इवन मारुति सर, मारुति भी कोई खराब नहीं है। अगर आप मारुति देखोगे तो लॉन्ग टर्म में इसमें ब्रेकआउट है मारुति हम्म, में, एंड सेल्स में सब आई थिंक डूइंग वेल मारुति। ये दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ मारुति। ईयरली चार्ट देखो, ऑल टाइम इट इज गिविंग ए ब्रेकआउट, 1 2 3 4 5 6 7 का ब्रेकआउट है सर। 7 years ईयरली ब्रेकआउट है। दिस इज ईयरली, ईयरली में आपको दिखा रहा हूं, ये 7 इयर्स का ब्रेकआउट है मारुति में। इससे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा सर, एक स्टॉक। और ये भी ऐसा ब्रेकआउट नहीं है, इट हैज, देखो मींस इट हैज मूव्ड अप फ्रॉम 500 लेवल्स टू अराउंड 10,000 11,000 उस लेवल्स पे, एंड इट हैज गिवन ए ब्रेकआउट। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो 3 इयर्स, तो आपको एक अच्छा रिटर्न आना चाहिए सर। ओके हाँ, गुड। Maruti on the long-term charts has given breakout, but having said that, my preferred bet on the auto space would be M&M and TVS Motors. TVS Motors preferably, कोई उसमें दो राय नहीं है सर। अच्छा, बिफोर वी क्लोज इट एक्चुअली, कैन यू गिव योर लास्ट कमेंट ऑन द स्टॉक गेल? गेन, गेल का ऊपर है, कुमार वी ने पूछे थे। गेन is again a market performer only sir, market performer only, nothing much, means uninspiring है सर। नहीं, नथिंग मच टू ऐड ऑन गेन, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हो सकता है गेन, बट शॉर्ट टर्म में इट इज लूजिंग इज लस्टर सर। ओके ठीक है। I think great talking to you, Pradyut ji. You have spoken about many of the stocks, and agar if I have to take home certain inputs from your session, this session is that currently M&M, Ashok Leyland, even Maruti, these are the TVS Motors, these are the stocks, and नेटवर्क also टेक्नोलॉजी इफ यू कैन होल्ड फॉर 2-3 years। yes, and also you talked about new age technology stocks, right? एटर्नल ऑन एनी डिक्लाइंस, एफएल। और फार्मा में अगर आपको करना है तो सिप्ला वुड बी ए गुड स्टॉक सर। देखिए इसमें ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रम्प टैरिफ जो भी न्यूज है, इट इज आउट परफॉर्मिंग एंड गिविंग ए ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है सर सिप्ला। Correct. माय सेंस इज दैट 12 to 15 मंथ्स 1800 के लेवल्स में जाना चाहिए, अब टैरिफ अगर सब चीजें सेटल होता है। ठीक है। Thank you so much, Pradyut ji. Nice, lovely, nice talking to you. And फाइन सर। I'm sure our participants also got some insight, got the insights what they're looking for. So with that, I'd like to close the session today. Thank you so much, everyone. Have a great day ahead. And all the viewers, yes, and thank you for being part of this program. Thank you.
Thank you, sir. Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.